Hello students, let us continue with our third video, part 3 of chapter 1 introduction. In the last video we saw about what is income and we saw about the 5 heads of income. Salary income, income from house property, income from business or profession, income from other sources and capital gain. So these are the 5 heads of income which are taxable. Now let us proceed further that how the tax is calculated, what is the format, etc. Now, the total of 5 heads of income, the total of 5 heads of income is your total gross income. It will be your total gross income. अब ज़रूरी नहीं है एक बंदे की पांचों हेड में से इनकम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. कोई 2 में से भी हो सकती है, 1 में से भी हो सकती है, 3 में से भी हो सकती है. बट 5 हेड्स की इनकम के टोटल को टोटल ग्रॉस इनकम कहा जाता है. उसके बाद लेस डिडक्शंस. नाउ द डिडक्शंस आर द बेनिफिट व्हिच अ पर्सन रिसीव्स and the deductions sections are, it is from under section 80C to 80U. After the deduction, what will come? That will be taxable income, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है. सो taxable income is that on which the tax liability is determined and calculated. Okay, now here I would like to explain this with one example. Say my income is 6 lakh rupees and I am getting a deduction in this under section 80C of 1 lakh rupees. So 6 लाख में से मैं 1 लाख निकाल दूंगी तो इट विल कम टू 5 लाख रुपीस. सो जो टैक्स मुझे 6 लाख पे लगने वाला था वो मुझे कितने पे लगेगा? 5 लाख पे लगेगा. तो ये डिडक्शंस क्या होते हैं? ये डिडक्शन बेनिफिट्स होते हैं. तो ये डिडक्शंस का बेनिफिट क्लेम करने के लिए अ पर्सन हैज टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस पर्टिकुलर हेड्स. देन ओनली अ पर्सन इंडिविजुअल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द डिडक्शन. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है. टोटल ग्रॉस इनकम लेस योर डिडक्शंस विल गिव यू टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है. नाउ 80C से लेके 80U तक कुछ सेक्शंस है जिसके बारे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. 80C, a very important section that is in which is in respect of savings and investment, and the limit for 80C is 1,50,000. 80D is for Mediclaim. The limit for general citizens or taxpayer is 25,000 and for senior citizen it is 30,000. 80G is for donation. डोनेशन का भी बेनिफिट मिलता है. दैट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो. प्राइम मिनिस्टर फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिल सकता है. बट अगर गांधी फैमिली के फंड्स भी हैं उसमें आपका कुछ 50% बेनिफिट होगा. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अलग अलग टाइप के डोनेशंस का आपको अलग अलग बेनिफिट मिलेगा. कहीं आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, किसी में 50% मिलेगा, किसी में 10% मिलेगा. So ultimately, the donation also helps to reduce the tax burden. 80U is for disabled people. Now let us see these sections in detail. The very first one is 80C, which is very important और जिसकी limit है 1,50,000. See, this section, or you can say this deduction, is basically for saving and investment. बंदे को अपना टैक्स बचाना है तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से करता है कि उसकी सेविंग भी हो जाती है. तो उसमें आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट 5 years, tuition fee payment, employee provident fund. So
इन सबका मिला के लिमिट कितना है? 1,50,000. इफ अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन ऑल दिस एवेन्यूज, वो चाहे 2 लाख तक करे, बट उसको बेनिफिट या डिडक्शन कितने रुपए तक मिलेगा? 1,50,000. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग पार्ट ऑल्सो. मतलब इससे टैक्स सेविंग भी हो जाती है, एक बंदे की सेविंग भी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है. हर एक इंसान इसमें तो पैसा डालता ही डालता है. एटीसी में आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, यू कैन आस्क देम ऑल्सो. टैक्स बचाने के लिए एटीसी इज द बेस्ट 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 थिंग. उसके बाद let us come to the next section, that is about ATU and ATDDB for disability. Now ATU is for the individual who is suffering from disability. मतलब खुद जो टैक्स पेयर है वो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो इन केस ऑफ 40% ऑफ डिसेबिलिटी द पर्सन विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 75,000. एंड 80% सीवियर डिसेबिलिटी है तो गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 1,25,000. Now this was an individual suffering from disability. Now next is under section 80DDB. If any dependent family member of the individual is suffering from disability, मतलब जो टैक्स पेयर है उस पे कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, वो कोई डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो वहां भी डिडक्शन मिलेगा. 40,000 फॉर जनरल, 60,000 for senior citizen, 80,000 for super senior citizens. Next one is ATD, that is mediclaim. Yes, लोग मेडिक्लेम में पैसा डालते हैं, वहां से टैक्स बेनिफिट में भी फायदा होता है एंड मेडिक्लेम का बेनिफिट भी रिसीव्ड हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो the deduction benefit which is available in mediclaim is 25,000 for general taxpayer, the limit is 25,000, and 30,000 for senior citizen. So this is the exemption limit which is received in this mediclaim. This includes mediclaim premium, health checkup, CGHS. Now next is under section 80E. E stands for education. So if any loan is taken in context to higher education, so repayment of the loan which is taken for higher education by him or her for their children or spouse, that is also liable for getting the deduction under section 80E. Then under section 80TTA, now this deduction is available in respect of interest on deposits which is earned in your saving account, post office, etc. In this, time deposits are not included. Time deposits means your FDs, that is not included. And the limit for the interest exemption is 10,000. फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में साल में 20,000 का इंटरेस्ट आता है सेविंग अकाउंट में, बट आपको 20,000 तक का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट सिर्फ 10,000 तक का ही मिलेगा. ये उसका रूल है. सो अंडर सेक्शन 80TTA the benefit is available. Apart from this, ATCCC, CCD, GG, CCG, EE, GGB, GGA, etc. ये सब है, but we are not going to study in that detail about this. So, my dear students, this part of the video was very important because we saw कि what is total gross income. Total gross income में से less deductions. Deductions are available from under section 80C to 80U, and then you get the total taxable income जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, राइट. इसका पूरा फॉर्मेटिंग, कितना टैक्स परसेंटेज है, कैसे इसकी कैलकुलेशन है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4 वीडियो. तो स्टूडेंट्स जस्ट ये सेक्शंस को ध्यान रखना. इसमें एटीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. लोग उसमें पैसा डालते ही डालते हैं. जो टैक्स पे करता है उसका पैसा अंडर सेक्शन एटीसी में होता ही होता है, एंड उसकी लिमिट है 1,50,000. एंड जनरली people go for mediclaim also, and
समटाइम्स डोनेशन ऑल्सो। सो ये तीन तो कॉमन है एकदम।